नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के न्यूज बुलेटिन में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और शहर, जिला और देश दुनिया की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं देश दुनिया में दर्ज कोरोना के आंकड़ों से। विश्व में अब तक कोरोना के 16 करोड़ 65 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में अब तक 2 करोड़ 62 लाख कोरोना से संक्रमित हुए हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 7,80,000 कोरोना केस अब तक पॉजिटिव दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आंशिक लॉकडाउन में राहत मिलते ही गुजरात में खुले बाजार, व्यापारियों ने ली राहत की सांस। देश को नई दिशा दिखाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि, कांग्रेस ने मनाया सद्भावना दिवस। और बीएमसी की स्थायी समिति की हुई बैठक, कई टेंडर पर विपक्ष को आपत्ति। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे अब धीरे धीरे कर अनलॉक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक गुजरात के 36 शहरों में दुकानें खुली रखी गई। वैश्विक कोरोना काळना बीजा तबक्कानी अंदर आंशिक लॉकडाउन सरकारने नाखवानी फरज पड़ेली, कारण के कोरोना नियंत्रित करवा माटे आ एकमात्र उपाय हतो। परंतु आंशिक लॉकडाउन ने पगले કેટલાક વેપારીઓને ફાયદો થયો, જેમાં આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓવાળા હતા, જ્યારે બીજા વેપારીઓ હતા જે અન્ય વિતરણ વ્યવસ્થાવાળા હતા એ તમામ અત્યારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે। અને આજે એમને 9 થી 3 વાગ્યા સુધી માત્ર ખોલવાની છૂટ આપી છે। કેટલો ધંધો થશે, શું થશે, કારણ કે પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું એ લોકોને મુશ્કેલ થઈ ગયું। ધંધા રોજગારીની અંદર ફટકો પડ્યો, સાથે માણસોના કર્મચારીઓના પગાર કાઢવાના હોય એની તકલીફ થઈ ગઈ। અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો આજે આંશિક લોકડાઉનનો બીજા તબક્કામાં ખુલવાનો આજે પ્રથમ દિવસ છે, ત્યારે બજારની અંદર દુકાનો તો ખુલી રહી છે પણ ગ્રાહકો દેખાતા નથી, કારણ કે અત્યારે 10 વાગ્યાનો સમય જે થશે તો 11-12 વાગ્યા પછી ગ્રાહકો નીકળતા હોય છે બધા બપોર પછી, અને એ ટાઈમે એમને દુકાન બંધ કરવાનો, વસ્તી કરવાનો સમય થઈ ગયો હશે। એટલે કે ધંધો જે જોઈએ એ પ્રમાણે મળશે નહીં એમને, અને એના કારણે પારાવાર મુશ્કેલી કરવી પડશે। આપણે વાત કરીએ વેપારી સાથે કે શું કહેવા માગે છે, આંશિક લોકડાઉનમાં કેટલો ફટકો પડે, શું થયું છે? 28 દિવસ જે બંધ રહ્યું, તકલીફ હતી, એ ખોટો લોકડાઉન આપેલું હતું। કરવું તો પૂરેપૂરું લોકડાઉન આપવું હતું, આનું કોઈ ચેનલ તૂટે એવી હતી નહીં, આ ખોટું લોકડાઉન હતું, એમ કોઈનો મતલબ જ નહોતો એમ। આપે સાંભળ્યું વેપારીના મતે કે આ આંશિક લોકડાઉન ખરેખર ખોટું લોકડાઉન આપવામાં આવેલું હતું ને આનો કોઈ મતલબ નથી રહેતો। વાત કરીએ અન્ય વેપારી સાથે, શું કહેશો વડીલ, તમારા આંશિક લોકડાઉનમાં આજે પ્રથમ દિવસ ખોલવાનો 28 દિવસ બાદ કેવી પરિસ્થિતિ છે? ગ્રાહકીમાં મજા તો રહેવાની નથી, પબ્લિક ગામડાની આવી શકવાની નથી। જે ગામડાની પરિસ્થિતિ છે એ સિટીમાં આવી શકે કેવી રીતે? વાહન વ્યવહાર વગર, બસો વગર કઈથી આવી શકે વડીલ? બીજું કશું જ નથી। આ જે લોકડાઉન આપ્યું છે એના કરતાં લંબાયું હોત તો સારું રહે, કાં તો ટાઈમ વધાર્યો હોત તો બી વાંધો ના આવે। તમે સરકાર પાસે આર્થિક પેકેજ કોઈ માંગ? આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ જ છે, એનો કંઈ સવાલ જ નથી ને મોટા ભાઈ અત્યારે સોશિયલ। આપે સાંભળ્યું વેપારીના મતે, કારણ કે મંગળ બજાર એક એવું બજાર છે જ્યાં આજુબાજુના ગામડાઓની વસ્તી અહીંયા ખરીદવા માટે આવતી હોય છે ને ભારે ધસારો રહેતો હોય છે। જો વાહન વ્યવહાર ચાલુ નહીં હોય, લોકોમાં ભયનો ડરનો માહોલ હશે તો અહીંયા આવશે જ નહીં, એને માત્ર 4-5 કલાકનો જ સમયગાળો જ આ લોકો માટે, એના કારણે પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। જોવું એ રહ્યું આગામી દિવસોમાં કઈ રીતનું સરકાર 27મી પછી ડિસિઝન લે છે અને વેપારીઓને કઈ રીતની રાહત મળે છે। સમગ્ર વડોદરા વેપાર વિકાસ એસોસિએશન અને કોન્ફેડરેશન ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રેડર્સ ગુજરાતના તમામ વેપારીઓને 23 દિવસ પછી આજથી શરૂ થતા આ 6 કલાકના બિઝનેસ માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। ખૂબ સંયમથી બિઝનેસ કરશો। ફરી વખત આપણે બિઝનેસ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે। મહેરબાની કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પૂરેપૂરું પાલન કરજો, સરકારના નિયમોનું પૂરેપૂરું પાલન કરશો। જ્યાં આપણે વિરોધ કરવાનો છે ત્યાં કરી લીધો છે, પણ હવે જ્યારે 6 કલાકની 27 તારીખ સુધી છૂટ મળી છે તેમાં શાંતિથી સરસ બિઝનેસ કરીને આ 23 દિવસના આપણને જે બેકલોગ પડે છે એનું આપણે કવર કરી શકીએ એવી તમામને શુભેચ્છાઓ। ખાસ તમારા માધ્યમથી હું ફરી એક વખત કહેવા છું કે આપણે સૌ સંયમ વર્તીશું તો સરકાર અને કોરોનાનો કહેર ઓછો થશે તો સરકાર 27 પછી આખા દિવસનું લોકડાઉન ખોલવાનું વિચારી રહી છે। માટે વેપારીઓ આપણે જે રીતના વર્તીશું એ પ્રમાણે અને કોરોનાનો કહેર ઓછો થશે એ પ્રમાણે 27 પછી લગભગ 8 વાગ્યા સુધી બજાર ખુલ્લું રહે એવી અમને આશા છે।
आज सुबह से वडोदरा में बाजार और दुकानें तो खुल गई थी, लेकिन 3 बजे तक ही दुकानें खुली रखनी थी। ऐसे में दोपहर के 3 बजते ही बाजार बंद करवा दिए गए। मांडवी, मंगल बाजार जैसे इलाकों में कई व्यापारियों ने स्वयंभू अपनी दुकानें बंद कर दी। वहीं कई इलाकों में पुलिस ने पहुंचकर दुकानों को बंद करवाया। दरअसल कोरोना केस गुजरात में लगातार घट रहे हैं। ऐसे में आंशिक लॉकडाउन को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। મહેરબાની કરીને ને તમે તો વારંવાર અપીલ કરીએ બરોબર છતાંય તમે સમજતા નહીં. હા તો મહેરબાની કરીને 3 વાગે જતું રહેવાનું તમારે. કાલથી તમે ભાઈ અમે બધું સમજીએ તમે આટલા દિવસથી નહીં ખોલી એટલે કંઈ તમે તમે જેટલો આપણો જેટલો કાયદેસર ટાઈમ મળે. वडोदरा शहर में बाजारों के साथ साथ आज कपड़ा बाजार भी खोला गया। अलकापुरी के गारमेंट एसोसिएशन ने इस मौके पर अपनी दुकानें खोलने के साथ साथ सरकार के प्रति आभार भी प्रकट किया। गुजरात के ज्यादातर शहरों में आंशिक लॉकडाउन के चलते पिछले कई दिनों से वडोदरा में सिर्फ जीवन जरूरत की वस्तुओं की दुकानें खोली हुई थी, लेकिन सरकार ने कल व्यापारियों को राहत देते हुए सभी दुकानें खोलने की इजाजत दी है। ऐसे में अलकापुरी के गारमेंट एसोसिएशन के व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें कई दिनों बाद खोली। इस मौके पर व्यापारियों ने सरकार का आभार प्रकट करते हुए पिछले दिनों उन्हें हुए नुकसान को भरपाई करने के भागरूप कई रियायतें मांगी है। આજે આપણે લાસ્ટ 28 તારીખથી દુકાનો બંધ હતી, આજે 23 દિવસ દુકાનો બંધ રહી છે। તો સૌથી પહેલાં તો અમે ગુજરાત ગાર્મેન્ટ એન્ડ ફેબ્રિક એસોસિએશનના બરોડાના કાપડ બજાર આજે ભેગા થયેલા છે અને સૌથી પહેલાં અમે સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે તેઓએ અમારી વિનંતીને માન આપી અને આજથી દુકાન 6 કલાક ખોલવાનો ટાઈમ આપ્યો છે। એના ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે સરકારશ્રીને। બીજું અમે સરકારશ્રીને એક વિનંતી કરીએ છીએ કે આવનારા 28 તારીખથી સરકારશ્રી રાબેતા મુજબ દુકાન ખોલી આપે તો બધાનો ધંધો રોજગાર ચાલશે। આપ જાણો છો કે 15 મહિના બંધ હતું, 15 મહિનામાં 4 મહિના બધી દુકાનો બંધ હતી અને 4 મહિનામાં બાકીના પણ મહિનામાં 50% દુકાનો બંધ રહેલી છે। અને બીજું કે લાસ્ટ ટાઈમ પર 50 થી 100 માણસો એલાઉડ હતા, તેથી અમારા ધંધા રોજગારને બહુ જ નુકસાન થયું છે। એનઆરઆઈ પણ આવેલા નથી, અમારો ધંધો હાર્ડલી 15-20% થયેલો છે, જેથી કરીને અમારે અમારા સ્ટાફનો પગાર આપવામાં, બેંકના લોનના હપ્તા ભરવાના કે પીએફઈએસને ભરવાના કે પછી દુકાનના ભાડા ભરવા, આ બધી ઘણી તકલીફ છે। અમારી સરકારશ્રીને ખૂબ ખૂબ નમ્રપણે વિનંતી છે કે વહેલી તકે બેંક મોનિટરિંગ કરશો તો જ સરકાર અમે લોકો આમાંથી બહાર આવીશું। જેટલું વહેલું આ બેંક મોનિટરિંગ કરશો, અને અમારી વિનંતી છે કે 2022 માર્ચ સુધી બેંક મોનિટરિંગ કરી આપે અને પીએફઈએસઆઈના સ્ટાફના તથા ઓનર્સના જે ભરવાની રકમ છે એ કોઈપણ જાતની પાછળ વખત માર્ચ 2022 સુધી ભરી આપે, જેથી અમને વેપારીઓને રાહત થાય। आतंकवाद हमेशा ही भारत देश के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहा और सन 1991 में 21 मई के दिन भारत ने ऐसे ही एक आतंकवादी हमले में देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिया था। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस ने सद्भावना दिवस मनाया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई सन 1991 की रात में तमिलनाडु के श्री पेरम्बूर में एक चुनावी सभा के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। इस घटना में आत्मघाती महिला धनुष समेत 14 अन्य व्यक्ति मारे गए थे और ये संभवतः पहला आत्मघाती विस्फोट था जिसमें किसी बड़े नेता की जान गई हो। भारत रत्न राजीव गांधी ऐसे कर्मयोगी थी जिनकी जीवन यात्रा में मानवता, सहजता, सरलता और निश्चलता के कई मुकाम रहे। राष्ट्रहित उनके चिंतन में केंद्र में था। सर्वधर्म सद्भाव उनके मानस में रचा बसा था। राजीव गांधी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय था। नियति ने समय के कैनवास पर उन्हें बहुत कम समय बख्शा, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने इतिहास के कैनवास पर अपनी अनूठी और अमिट छाप छोड़ी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेस ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से सेवा और सद्भावना के तौर पर मनाने के लिए कहा है और उन लोगों की मदद करने की अपील की है जो कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने राजीव गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि सत्य, करुणा और प्रगति।
वहीं प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, दया से बड़ा कोई साहस नहीं है, करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और विनम्रता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। इसी क्रम में वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा भी कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी को पुष्पांजलि करते हुए उनके योगदान की सराहना की गई और सद्भावना दिवस मनाने के भागरूप मास्क और ठंडे पानी का वितरण भी किया गया। हमारा आदरणीय प्रदेश प्रमुख अमित भाई चावड़ा आदेश अनुसार वडोदरा शहर में पण कांग्रेस परिवारजने पुष्पार्पण कर्યું અને સેવારૂપી કાર્ય કર્યા। આજે રાજીવ ગાંધીજીને યાદ કરીએ તો 21મી સદી તરફ લઈ જવાની એ વખતે એમને જે નિશ્ચય કર્યો હતો, દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો હતો ને જ્યારે પ્રધાનમંત્રી તરીકે એમને કાર્યશૈલીમાં એમનું એક સ્વપ્ન હતું, લોકોના ઘરે ઘરે ગાડી હોવી જોઈએ, યુવાનોના હાથમાં મોબાઈલ હોવા જોઈએ, ગોકુળ ગામો હોવા જોઈએ, જેથી એને પંચાયત રાજની રચના કરી। ત્યારબાદ એમને એક સપનું હતું કે રાજીવ ગાંધીજી હંમેશા એવું વિચારતા હતા કે છેવાડાનો માણસ દેશને વિકાસશીલ બનાવવો હોય, દેશને 21મી સદી તરફ લઈ જવો હોય તો દેશના નેતૃત્વમાં યુવાનોને પણ ભાગીદાર બનાવવા જોઈએ, જેથી 18 વર્ષની ઉંમરે યુવાનોને મત આપવાનો અધિકાર આપ્યો। આવી વિકાસશીલ તમામ પ્રવૃત્તિઓમાં એમના શાસનકાળ દ્વારા કરવામાં આવી અને આજે વિશ્વમાં ભારત દેશ જે નામના મેળવી છે એમાં સ્વર્ગસ્થ શ્રી રાજીવ ગાંધીજીનો પણ અમૂલ્ય ફાળો છે। આજના દિવસે એમને યાદ કરીને પુષ્પાર્પણ કરીને કોંગ્રેસ પરિવારજનોએ એમને નમન કર્યા છે। राजीव गांधी, राजीव गांधी। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक आज आयोजित हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों पर कांग्रेस के नगर सेवकों ने अपनी आपत्ति भी जताई है। वडोदरा महानगर पालिका में आज स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एक ही कॉन्ट्रैक्टर को 7 नए अर्बन हेल्थ सेंटर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने मामले चर्चा की गई, लेकिन इससे पूर्व कांग्रेस के नगर सेवक हरीश पटेल ने स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल को पत्र लिखकर रीटेंडरिंग करने की मांग की है। आज स्टेन्डिंग कमिटीनी जे मीटिंग है, कोरोनानी महामारी चाली रही है, एवा समय 7 नवा अर्बन हेल्थ सेंटर बनावવાનું જે કામ આવ્યું છે, સરાહનીય કામ છે। 7ની જગ્યાએ 10-15 બી નવા આયોજન થાય તો કોંગ્રેસ પાર્ટી હંમેશા એમની સાથે છે। પણ આ કામની પાછળ આ કામ જે છે એક જ કંપનીને 9 કરોડની અંદર આપ્યું છે, 9 કરોડ ને 34 લાખને સમથિંગ। એક અર્બન હેલ્થ સેન્ટર જે છે એનું જે બાંધકામ છે એ 4740.78 પર સ્ક્વેર ફૂટ છે। ટોટલ 7 હેલ્થ સેન્ટર છે એટલે ટોટલ 33,185 સ્ક્વેર ફૂટનું કામ છે। આ કામ જે ભાવથી આપવામાં આવ્યું છે એ 9 કરોડ 34 લાખ, એટલે એને ડિવાઈડ કરીએ પર સ્ક્વેર ફૂટ તો 2800 રૂપિયાનો ભાવ થાય છે। વડોદરા શહેરને આખા ઇન્ડિયાની અંદર તમે જોશો, આખા ભારતમાં કે આટલો કન્સ્ટ્રક્શનનો ભાવ ચાલે છે। આ પત્ર લખીને અમારો એક જ વિરોધ છે કે અર્બન હેલ્થ સેન્ટર તાત્કાલિક ધોરણે નવા બનવા જોઈએ। એની સાથે સાથે એક જ કોન્ટ્રાક્ટરને 7 અર્બન હેલ્થ સેન્ટર બનાવવાનું જે કામ આપવામાં આવ્યું છે એનો અમને સખત વિરોધ છે। આની જગ્યાએ 7 અલગ અલગ ટેન્ડર કરીને 7 અલગ અલગ કોન્ટ્રાક્ટરને કામ આપ્યું હોત તો જે કામ 7 એક જ જણને કામ આપ્યું એની જગ્યાએ અલગ અલગને આપ્યું હોત તો જલ્દીથી અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ચાલુ થઈ જાત, વડોદરા શહેરની जनता એનો ફાયદો થાત। वहीं अन्य एक मामले में 4 जोन के लिए पेविंग ब्लॉक लगाने के मामले टेंडर दिए जाने पर कांग्रेस की नगर सेवक पुष्पा वाघेला ने आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि अगर इतने कम दाम में कोई कॉन्ट्रैक्टर ये काम करता है तो उस विकास कार्य की गुणवत्ता पर जरूर सवाल उठने चाहिए। आज मरनाड़ी स्टेन्डिंग कमिटी आ स्टेन्डिंग कमिटीनी अंदर वार्षिक इजारा पत्थर पेविंग અને નિભાવણીના એના 50 લાખની મર્યાદામાં કામ આવેલું છે અને આ કામો સેમ 4 ઝોનના 43.77% ઓછા રેટથી આવેલું છે। એટલે આટલા ઓછા ભાવ 43.77% ઓછો રેટ પ્લસ 12% GST આપણે ગણીએ તો 55% જેટલા ઓછા ભાવથી જો કોઈ કામ કરવા તૈયાર હોય 4 ઝોનમાં પથ્થર પેવિંગ અને નિભાવણીનું કામ તો શંકા ઉપજાવે કામની ગુણવત્તા બાબતે। કોઈ મફત કામ કરવા આવે, સેવા કરવા આવે, વડોદરા શહેરમાં 4 ઝોનમાં ઇજારો ભરતા હોય, અમને કોઈ જ વાંધો નથી,
પણ જ્યારે આ કામ બાબતે જો ગુણવત્તા વિસ્તારના કામોની અંદર ના જળવાય તો સીધી આંગળી કોર્પોરેટરો ઉપર ઉછળે। 21 मई के दिन को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस खास दिवस पर आतंक के खिलाफ लड़ने की शपथ पुलिस कर्मचारियों को और जवानों को दिलाई जाती है। वडोदरा शहर में भी कुछ ऐसा ही आयोजन पुलिस भवन में किया गया। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर करना है, आम लोगों की पीड़ा को उजागर करना और ये दिखाना कि ये कैसे राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक है। दरअसल वर्ष 1991 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसी के बाद से हर वर्ष भारत में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21वें आतंकवाद विरोधी दिवस पर वडोदरा शहर पुलिस भवन में अधिक पुलिस कमिश्नर चिराग कोरडिया ने पुलिस भवन के जवानों को आतंकवादियों और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ निष्ठा के साथ लड़ने का संकल्प दिलवाया। सामाजिक समरसता का माहौल कायम रखने के लिए हमेशा तैयार रहने की शपथ पुलिस जवानों को दिलवाई गई। इस मौके पर सहायक पुलिस कमिश्नर कंट्रोल रूम विमल गामित भी उपस्थित रहे। આજના દિવસે તમામ પોલીસ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, હેડક્વાર્ટરના સભ્યો અને અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં અમારા જવાન અને અધિકારીઓ છે એ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ સામે લડવાના દૃઢ સંકલ્પ તથા દેશમાં સામાજિક એકતા અને સદ્ભાવનું વાતાવરણ રહે એ માટેના આજે શપથ લીધા છે। આ જે શપથ છે પૂરા ઇન્ડિયામાં તમામ જગ્યાએ પોલીસ ઓફિસરો છે એને આજના દિવસે 12 વાગે આ શપથ લીધેલા છે। और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। वडोदरा शहर के पुराने इलाकों में काफी पुरानी इमारतें हैं जो फिलहाल अप्रिय घटनाओं को न्योता दे रही है। गैंडी गेट में एक ऐसा ही पुराना खस्ताहाल मकान देखा जा रहा है। वडोदरा शहर के गैंडी गेट रोड पर चित्तेखाना की गली में एक पुराना खस्ताहाल मकान है जो काफी खस्ता स्थिति में है। पुराना खस्ताहाल मकान किसी भी वक्त गिर जाने की स्थिति में है। हाल ही में जो चक्रवात आया था उसमें शहर में कई दुर्घटनाएं घटी थी। ऐसे में मानसून के दौरान ऐसे खस्ताहाल मकान हादसों को न्योता दे सकते हैं। वडोदरा महानगर पालिका को स्थानीय निवासियों द्वारा बार बार मामले से अवगत कराया गया है, लेकिन प्रशासन ने अब तक मामले की सूध नहीं ली है। ऐसे में ये खस्ताहाल मकान लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। आ जर्जरित मकान है, घना समय पड़े है, हमणां पर पड्युं छे। અમે વારંવાર રજૂઆત કરી છે। એમના અંદરના ઝઘડાના હિસાબે આનો કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતો નથી। અહીંયા નજીકમાં આરએન કે પંડ્યા સ્કૂલ છે અને અવર જવર બહુ છે આખા દિવસની। અમે હમણાં ટેમ્પરરી આ બાંબુ મૂક્યા છે। આજથી 5 વર્ષ અગાઉ પણ આના માટે નોટિસ કોર્પોરેશને આપી હતી તો પણ કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી અને ગઈકાલે બી અમે અહીંયા અંદરના મળીને નોટિસ આપી છે તે આજના દિવસ સુધી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી। અમે કાલુપુરા ગયા હતા વોર્ડ ઓફિસમાં, ત્યાંથી બી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી। અમને કીધું કે આજે કાર્યવાહી થશે, તો કોઈ મોટી જાનહાનિ થશે તો આનો જવાબદાર કોણ રહેશે? જો આને આગળ કોઈ એક્શન લેવામાં નહીં આવે તો અમે આવતીકાલે આજુબાજુના રહીશો બધા જઈને મેયરને અમે અરજી આપીશું। वीएनएम न्यूज बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएम के साथ। बच्चों ने वेट पुट ऑन कर लिया है, ओबेसिटी की ओर चल रहे हैं। कोविड ने इसमें तबाही मचा दी है। एक साल में 5-5 किलो 6-6 किलो बढ़ रहा है। ये घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं है तो स्नैकिंग चलता है, टीवी देखो, नाश्ता करो, फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे 0 हो गया है। कोविड तो शारीरिक तकलीफ है ही, लेकिन मानसिक तनाव जो होता है, जो सबसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर से तो कम्युनिकेशन स्किल ही चली गई है, बात करने का तरीका ही वो लोग भूल गए। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे वीएनएम टीवी किड्स यूट्यूब चैनल पर और रात 9 बजे इन डैन केबल पर वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल और वीएनएम टीवी फेसबुक पेज पर।
युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा स्मार्ट सिटी की योजनाओं के तहत शहर के कई इलाकों में तालाब के ब्यूटिफिकेशन शुरू किए गए थे, लेकिन कई तालाबों के ब्यूटिफिकेशन अब तक शुरू ही नहीं हुए हैं। ऐसे में इन ब्यूटिफिकेशन पर सवाल उठना लाजमी है। વડોદરા શહેરના તળાવ ઊંડા કરવા માટેની કામગીરી અને પાણીનો જળસ્ત્રોત જળવાઈ રહે એના માટે પાલિકા દ્વારા અથવા તો કહીએ તો રાજકીય અગ્રણીઓ દ્વારા તળાવ ઊંડા કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી। વડોદરા શહેરના જેટલા પણ તળાવો છે તમામ ઊંડા કરવાના, એના બ્યુટિફિકેશન કરવાનું કહેવાય છે કે આરંભે સુરા, આ આરંભે સુરા નેતાઓનું એક ઉદાહરણ આદર્શ આપી રહ્યા છે તમને। આ અહીંયા પ્રથમ રેસિડેન્સી છે। વાત જો વિસ્તાર કહીએ તો સવિતા હોસ્પિટલ છે ત્યાંથી નજીક આવેલું તળાવ છે, જે આ તળાવને ઊંડું કરવામાં આવેલું। ગઈ વખતે મોટા મોટા નેતાઓ અહીંયા ઉદ્ઘાટનમાં આવેલા કે ભાઈ ખાતમુહૂર્ત કરીએ જ, અમે તળાવ ઊંડું કરી દઈશું, બ્યુટિફિકેશન કરીશું, પણ માત્ર 4 दिन की ચાંદની ફીર અંધેરી રાત જેવી હાલત છે આ તળાવની। આપ જોઈ રહ્યા છો ગંદકીનો ગરકાવ થઈ ગયો છે, અહીંયા કોઈ સાફ સફાઈની વાત નથી। અહીંયા બાજુમાં જ નાનો એક ખાડો આવેલો જે રોડની આ બાજુ છે, એનું પાણી અહીંયા નિકાલ કરવા માટેની એક નળી નાખેલી છે, એ પણ બ્લોક થઈ ગઈ છે, જેના કારણે અહીંયા ગંદા પાણીના સ્ત્રોત અહીંયા એકત્ર થાય છે અને મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધી રહ્યો છે। આપ જે રીતે જોઈ રહ્યા છો આ તળાવની બરાબર પાછળની સાઈડે ફ્લેટ આવેલા છે, એ ફ્લેટમાં જ અહીંના અત્યારના ચૂંટાયેલા સ્થાનિક કાઉન્સિલર સ્નેહલબેન પટેલ રહે છે, પણ એમને ખબર નહીં કે આ દેખાય છે કે નથી દેખાતું, પણ આ ખરેખર ચોમાસા પહેલાં આ તળાવની જો સાફ સફાઈ કરવામાં આવે, તળાવને ઊંડું કરવામાં આવે વ્યવસ્થિત, જે વાત કરવામાં આવેલી બ્યુટિફિકેશનની તો થોડું ઘણું બ્યુટિફિકેશન કરવામાં આવે તો જ આ લેખે લાગશે। બાકી આ કાગળ પર ખર્ચો થઈ ગયો અને કામ પતી ગયું એના જેવું જ લાગી રહ્યું છે। એટલે જે કહેવાય છે કે કાગળ પર ઘોડા દોડે છે કોર્પોરેશનમાં, એ વાત આજે સાબિત થઈ રહી છે એવું દેખાઈ રહ્યું છે। कैमरामैन विपुल अड़ियल साथे हिरेन मोदी, VNM न्यूज़ वडोदरा। वडोदरा शहर की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन CCTV कैमरों का इस्तेमाल असामाजिक गतिविधियों की बजाय लोगों के चालान काटने में ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। RTI एक्ट 2005 अंतर्गत RTI एक्टिविस्ट अतुल गामेची ने पुलिस विभाग से पिछले 5 सालों के दौरान CCTV कैमरा के आधार पर काटे गए करोड़ों के चालान पर जानकारी मांगी थी। इन CCTV कैमरा का उपयोग अन्य कई जगह करने में और नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में असफल रही सरकार पर अतुल गामेची ने सवाल उठाए। हाँ, जोवा जईए तो कुल रकम 36 करोड़ 34 लाख रुपया जेटली रकम वसूली है और आ छेल्ला 61 महीना में वसूली है, એટલે દંડ ઘણો મોટો કહેવાય। સાથે જોવા જઈએ તો 15 લાખથી વધુ લોકોને મેમો આપ્યો છે। વડોદરા શહેરની વસ્તી 22 લાખમાંથી 15 લાખને મેમો મળે, એટલે કહી શકાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક 36 કરોડ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ જે જમા થઈ છે, આ રકમ પણ એ લોકોએ એમના વિભાગ દ્વારા ગાંધીનગરમાં મોકલી છે। તો વડોદરા શહેરની જનતામાં હાલ જોઈ શકો છો કોરોના સંક્રમણ પણ ફેલાયું છે, ત્યારે જો આ રકમ વાપરીને વડોદરા શહેરના નાગરિકોને સુવિધાઓ આપી હોત, બોટલ આપ્યા હોત, રેડ ઇન્જેક્શન આપ્યા હોત તો વડોદરા શહેરના જનતાને પણ આભારી થાત। પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક વડોદરા શહેર પોલીસનો એક જ ગોલ હોય કે પૈસા ઉઘરાવવાનો ગોલ CCTV કેમેરાથી એ ચલણથી કરી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। देश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने विशेष गाइडलाइंस बनाई है, लेकिन अक्सर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन सामने आता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित एक शादी समारोह में तो हद तब हो गई जब बार डांसर्स को बुलाकर यहां गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई।
उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शादी कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर बार डांसरों से अश्लील ठुमके लगवाए गए। कोविड प्रोटोकॉल की ऐसी की तैसी करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए अब मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। ये मामला जनपद महोबा में पनवाड़ी थाना क्षेत्र के ठकुरासपुरा मुहाल का है, जहां एक शादी कार्यक्रम के दौरान बार डांसरों ने जमकर अश्लीलता परोसी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी सख्ते में आ गई और फौरन आनन फानन में कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पनवाड़ी क्षेत्र का एक डांस का वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में थाना पनवाड़ी में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। कोरोना महामारी के खिलाफ वडोदरा शहर में भी जंग जारी है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं। वार्ड नंबर 7 में नगर सेवक श्वेता चौहान ने ऐसे ही एक कार्य की शुरुआत की है। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और रावपुरा विधानसभा के विधायक राजेंद्र त्रिवेदी की प्रेरणा से वार्ड नंबर 7 में नगर सेवक श्वेता चौहान उत्तेकर द्वारा कोरोना वॉरियर्स की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उम्दा शुरुआत की गई है, जिसके तहत वार्ड नंबर 7 में आने वाले सभी स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण केंद्र, रैपिड टेस्टिंग सेंटर में कार्यरत 125 जितने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रोजाना गर्म नाश्ता और जूस पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर वीएमसी के मेयर केयू रोकड़िया और भाजपा के अन्य नेताओं की उपस्थिति रही। ये कार्यक्रम नवी धरती नागरवाड़ा अर्बन हेल्थ सेंटर में आयोजित हुआ। करजण में एक अजीबोगरीब हादसे में कार के आगे से गुजर रहा बाइक चालक अचानक स्लिप हो गया और तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। करजण नेशनल हाईवे नंबर 48 पर बामणगांव निकट कार और बाइक के बीच दुर्घटना हुई। दरअसल बाइक सवार तेज रफ्तार गुजर रहा था और स्लिप होकर कार के साथ टकरा गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करजण में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा कोरोना मरीजों को फ्रूट वितरण किया गया। करजण मियागाम के सुमेरु कोविड सेंटर में मरीजों को फ्रूट और मास्क वितरण कर उन्हें रिकवरी की शुभकामनाएं भी दी गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर ब्रह्मभट्ट, तालुका कांग्रेस अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य और तालुका और नगर पालिका के कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आरटीओ विभाग में ज्यादातर काम एजेंट के जरिए ही होता है। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में भी कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है। उत्तर प्रदेश के जनपद का आरटीओ विभाग कोरोना संक्रमण के तूफान के बीच दलालों की गिरफ्त में पूरी तरह फंस गया है। केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा देश और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लाख दावों के बीच ये ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से सामने आया है, जहां एआरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार की दीमक विभाग को खोखला कर रही है। जिले के आला अधिकारी मामले में सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बने हुए हैं, जबकि विभाग में लगे सीसीटीवी कैमरे केवल सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। जिले का आरटीओ विभाग हमेशा दलालों की साठ गांठ के लिए चर्चा में रहा है, लेकिन इस पर प्रशासनिक अधिकारी लगाम नहीं कस पा रहे हैं। ऐसे में किसकी रहम नजर के तले यहां एजेंट राज चलाया जा रहा है, उस पर बड़ा सवालिया निशान है। आपकी सीट पर कौन बैठा था? यहाँ पे जितने दलाल बैठे हैं, क्या ये सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट हैं? आप नहीं जानते? आप यहाँ विभाग पर खुला है, पूरा काम धड़ल्ले से हो रहा है, आप अकेले बनाने आए। बाकी आपको ये नहीं पता है कि ऑफिस में कितने लोग बैठे हैं? नहीं पता है। अभी यहाँ पे जो सब लोग बैठे हैं, तो क्या ये सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, कौन है? संविदा वाले हैं। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीएनएम का हर अपडेट हर घंटे लगातार आप तक पहुंचता रहे। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।